Hello everyone, as you know that in previous videos we have learnt about class 11th linear inequalities. Now in this video we will learn two topics of the same. The first topic is applications. In the previous video we learnt about linear inequalities in one variable. Now we will be learning about applications of linear inequalities in one variable. Here we will solve some questions and that will show you how to use that. A word problem type pattern is there. Okay, so let's start it. Linear, जैसे हमने आप लास्ट ईयर आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस को वर्ड प्रॉब्लम तो कैसे लास्ट ईयर यू हैव लर्नड अबाउट कि कैसे लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी तरह लीनियर इनइक्वालिटीज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं that we are taking as applications. So here in the first question, just see this: find the pair of consecutive all positive integers. Find the pair of consecutive odd positive integers when both are smaller than 18 and their sum is more than 20. This is being asked in the question. तो जैसे आप वहाँ x assume करते थे, here we will be taking only one variable, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरे equations को one variable form में लेके आना है. In case ऐसा कुछ question आ जाता है जिसमें आपको single variable नहीं समझ में आ रहा, you can go for two, but ultimately you have to convert it in one variable form. So this is C. देखते हैं क्या मिलता है. जिसकी सबसे पहले line देखिए, pair of consecutive odd positive integers. Odd positive integers का मतलब क्या होता है? The positive integers means natural number. Odd numbers, दो consecutive odd numbers हमें लेने हैं. Consecutive मतलब एक के बाद एक just आने वाले. So if I have taken, let the integers be, let the required integers be, अगर मैंने पहले को x लिया, what about the second? Odd numbers हैं. So you are aware of in two odd numbers a gap of 2 is there. If I'll add 2 in the first, I'll get the second one, x plus 2. So we have taken required integers as x and x plus 2. Now what are the conditions that are given to you? Inequalities क्या लिखी हुई हैं यहाँ देखिए ज़रा. Here it is written both are smaller than 18. So we are having, as per the question, what are we having? X is less than 18 and x plus 2 also is less than 18. इसको solve करने से क्या मिल जाएगा हमें? This will give us x less than 18 and x less than 16. अब जो चीज़ ज़्यादा common है that will be taken in the answer. X is less than 16 is given to you. Okay, दोनों conditions में x less than 16 हम लेके चलेंगे. The next condition C, क्या मिल रहा है यहाँ पे? Their sum is more than 20. So we are having x plus 2 is more than 20. ठीक है? That means 2x is more than 18 or we are getting x more than 9. So in all हमें क्या मिल गया देखिए ज़रा टर्म में. x is less than 16 and x is greater than 9. एक common condition हमें मिल गई. So what will be our answer? यहाँ x को specify किया है कि x is less than 16 है, less than 18 है. But when it is less than 16, I'll be taking that. So in all we are getting 9 is less than x is less than 16. तो यहाँ ऐसे कौन कौन से integers मिलते हैं हमें बताइए ज़रा. Question, just see what is mentioned in this question. Just see this thing. It is written in the first 4 papers, each of 100 marks. A student got 95, 72, 73, 83 marks respectively. If he is expecting an average, expecting an average of greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, find the range of the marks
he should score in 5th test. So we will be starting with solution. क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? Let the marks in 5th test be X. अब हमें कंडीशन क्या दीजिए? एवरेज क्या होता है? वी आर हैविंग 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83 प्लस x अपॉन 5 टेस्ट आर देयर एंड द एवरेज दैट वी आर गेटिंग इज कितने मार्क्स हैं आपके पास? देखिए ज़रा, 75 से ग्रेटर देन or equal, just see the condition, greater than equal to is also there, but less than 80 is mentioned. Using this condition we will be solving the answer. We will get the answer as 75 is less than equal to, देखिए क्या मिल रहा है आपके पास, चलिए count it, देखिए how much you are getting. 323 प्लस x अपॉन 5 इज लेस देन 80. जब आपने सॉल्व किया तो व्हाट आर यू गेटिंग? मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कितना मिलेगा? 70. इट इज़ 375. 75 5 को आपने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, लेस देन इक्वल टू 323 प्लस x इज लेस देन 400. अब क्या करना है आपको? जैसे आपने सिंपल इनइक्वेशन सॉल्व की थी, यू हैव टू रिमूव दिस 323, तो यू विल बी सबट्रैक्टिंग 375 minus 323 is less than equal to x is less than 400 minus 323. You will be getting the answer as 52 marks is less than equal to x is less than 77, isn't it? So the student should get the marks from 52 to 77. Less than 77 मतलब उससे कम कितना भी हो जाए, 77, 76.5 and so on. ठीक है? So write the answer. Whenever word problems are there, you have to write the answer. What will be the answer? The marks in 5th test can be 52 to less than 77, between, or can start from 52 and before 77, less than 77 be required the marks. This will be your answer. Let's go for the third question. The third question is, see this thing, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution on it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. It should contain more than that much. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? We are given 640 liters of 8% solution and we are adding 2% more to dilute it. So that amount we have to find कि 2% boric acid का कितना solution हमें mix करना होगा so that we can get the required result. Okay, let us go for the required solution B. कितना होगा? X liters. Let us start the solution. You can write required solution, you can write let the 2% boric acid solution be X. Okay, required solution be X liters. Now we'll go for as per the question. What shall we get? As per the question, we are getting what? Just see, read the question properly and get your answer. As per the question, it is written to you that 8%
of 640, 8% boric acid solution is of 640 liters. That amount is given to you, plus 2% of X is more than 4%, is more than 4%, equal नहीं दिया, 4% of resultant. Total solution कितना हो जाएगा? When you will be adding both the solution, you will be getting 4% of x plus 640. दोनों ही टाइप्स के आप सोल्यूशन को ऐड करेंगे और उसका 4% you will be getting. Okay, now we will be solving this. Solve करने से हमें क्या मिलेगा? या तो पहले आप second, and we will write the second equation. 8% of 640 plus 2% of x is less than 6% of x plus 640. Now we will be solving these two conditions. देखिए solve करके क्या मिलता है आपको. This is percent is mentioned over there, so you have to convert it number as 8 by 100. We will be writing 8 by 100 into 640 plus 2 by 100 into x is greater than 4 by 100 into x plus 640. Similarly, the next one will give you 8 by 100, same condition, into 640 plus 2 by 100 into x less than 6 by 100 into x plus 640. Let us simplify this. We can divide all the terms by 100 by 2 and we can get our answer. So we will be getting the next step as 2560 plus x is greater than 2x plus 3 it is 1280. We are getting this value. Now, and the second condition is again giving you 2560 plus x is less than 3x plus 1920. Are you getting this thing? Just check it out better. Okay, on solving these conditions again we are getting, अब देखिए यहाँ पे x इस तरफ ले जाते हैं हम, x is less than, इस टर्म को इस तरफ ले आए 1280. Okay, and what about the next one? The next one is x is 2x is greater than 640, or we are getting x is greater than 320. So how much liter is required to get the answer? We will be getting the answer by adding the required amount is in between 320 liters and 1280 liters. इन दोनों के बीच का जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा. Okay, जितना भी अमाउंट वो डालेंगे they will be getting the required result. Okay, so these were the word problems that we can use. इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं to solve linear inequalities in one way. Okay, now we are going for the second topic of this video. The second topic is linear inequalities in two variables. Okay, and we will be learning about the graphical representation of that linear inequalities, how to solve them. Okay.
So the next topic that we are starting is linear inequalities in two variables, and we will be learning about their graphical solution. You all are aware of a linear equation in two variables. The general form of it you are aware of. You can write a linear equation in one variable as what? This is two variables as what? Ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard form of linear equation in one variable. अब जब ये inequality में turn हो जाता है तो obviously in place of this 0 you will be getting less than or equal to, greater than or equal to, less than or greater than condition. अभी तक हमने बस one variable पढ़ा है. Now we are starting two variables. ठीक है, अब इन equations को solve किया कैसे जाता है? So first of all let us write the patterns of linear inequalities. A linear inequality in two variables is in the form of ax plus by plus c is less than or equal to, or we can write or greater than or equal to, less than, greater than 0. This is the general form of linear inequality in two variables. So you are aware of whenever we have to solve, we have to find the solution of linear equation. हम क्या करते हैं उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, और वी कैन पुट द वैल्यू, एक ही इक्वेशन पुट में हमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू मिलती है. इस तरह से वी यूज टू गेट अ पॉइंट. तो वही कुछ काम हमें लीनियर इनइक्वालिटी में करना है. बट आप जानते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू 2 दैट मीन्स इट इज़ ओनली 2. बट इफ़ x इज ग्रेटर दैन 2 और लेस दैन 2 दैट मीन्स मैनी टर्म्स कैन बी देयर, इजंट इट? तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होने से कोई कंडीशन आ जाती है, लेस देन होने से वैल्यूज़ आ जाती हैं. रियल नंबर्स की बात की जाए तो एनी वैल्यू वी कैन गेट अदर देन 2, x ग्रेटर देन 2, any of the value x can hold, isn't it? You are aware of this condition. So इसी तरह से जब हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे उसे ग्राफिकली हम कैसे लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करें. अ सिस्टम वी हैव टू सॉल्व हियर. Okay, so some of the basic concepts you have to learn about it so that you can solve the bigger questions directly. So let us go for solving the things. So I am directly starting with the graph पे हम बनाएंगे. It is better to plot it on the graph. अगर आपके पास ग्राफ पेपर है आप उसमें प्लॉट करते हैं तो ज़्यादा आपके पास easy मतलब करेक्ट आंसर्स आने के चांसेस हैं. But then also I am telling you the procedure, you will be plotting them on graph. Okay, the first question that I am starting is to solve or get the solution of anything. You can write 3x plus 4y less than equal to 12 if any condition is having less than equal to sign. So how to solve it? I am showing these things to you with the example with the help of examples. So first of all, whenever you have to solve the linear inequalities, the algorithm you must be aware of. Algorithm क्या होता है? The steps of solving the particular question. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले you have to get the linear equation is the linear equation which is formed by, if we will write the linear equation form, we have to plot the graph of a line only. We cannot plot the graph of, पहले शुरुआत जब हम ग्राफ प्लॉट करने में करेंगे तब हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं प्लॉट करते, हम एक लाइन का, दैट इज लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं. ठीक है, so we will be taking the linear equation related to this one. The related linear equation is 3x plus 4y is equal to 12. हमने ये वाली वैल्यू ले ली आपकी. अब इसका ग्राफ प्लॉटिंग तो आपको आता ही है. तो दिस टाइम व्हाट विल यू डू? वी विल ट्राई टू मेक द बॉक्स जैसे हम बॉक्स पैटर्न करते थे. और देर आर टू कंडीशंस ऑफ दीज टू पैटर्न्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो फर्स्ट पैटर्न इज दिस कि जैसे आपने 10th में सॉल्व किया था ग्राफ प्लॉटिंग, यू कैन टेक x एंड y एज वैल्यूज एंड व्हाट टू डू. अभी आप यहाँ पे
x को 0 पुट करिए, हमको कोशिश करनी 2 ही पॉइंट्स मिल जाएं, तो इट्स इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं करना हमने. When I'll put x as 0, I'm getting y as 4. When y is 0, x is 3. In that manner, we have got 2 points. And the another pattern is related to straight lines, और वो आपको straight line में फिर बाद में बता दिया जाएगा. The next is, अच्छा अगर आपको एक straight line मालूम है, अभी आप जानते हैं उसके बारे में, तो you can convert this equation in intercept form of equation of a straight line. Now, sir has given the conditions to you about it. You are aware of the intercept form is x upon a plus y upon b equal to 1. So you can go for this condition as x upon 4 plus y upon 3 is equal to 1. We can get this form and get the points easily. अब ये जो आपके पास वैल्यूज मिली है, you have to plot them on graph. ग्राफ पे आपको इसको प्लॉट करना है. ग्राफ में जब आप इसको प्लॉट करेंगे, जस्ट सी you are required to get, and in general इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस जो भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन दिए हैं उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है. यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज़ में जनरली आपके पास क्वेश्चन में x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके चलते हैं. इफ दे आर नॉट मेंशनिंग, नो नीड, बट इफ दे आर मेंशनिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स. ओके, सो हियर the linear equation is represented by this. इस तरह से आपके पास एक पॉइंट मिल गया 0, 4. Okay, when you are getting when x 0, y 3 and y 0, x 4, ये इंटरचेंज हो गया. So you are getting these values. तो इस तरह से आपको जो पॉइंट मिला, दिस इज 4, 0 है ना, यहाँ दिख रहा है. तो इस तरह आप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी 4, 0 लेके आ सकते हैं कि x इंटरसेप्ट आपका 4 है, तो वहाँ पे जो पॉइंट मिला. इन दैट मैनर यू विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ यू आर गेटिंग एज 1. अगर आप सिंपल पेज पे भी बनाते हैं तो प्रॉपर गैप के साथ ग्राफ बनाइए, क्योंकि कभी कभी कुछ पॉइंट्स आपके इतने पास हो जाते हैं उस सोल्यूशन में कि अगर आपने प्रॉपर गैप के साथ ध्यान से सही मेजरमेंट के साथ ग्राफ नहीं बनाया, एक आध पॉइंट स्किप हो जाता है. सो वी विल बी राइटिंग 1, 2, 3, 4 वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. हियर जितनी रिक्वायरमेंट है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस. आई एम गेटिंग दिस एज ओरिजिन. ओके, तो लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स. पॉइंट हमको कौन से मिल रहे हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज 0, 3. ओके, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3. आई हैव गॉट दिस पॉइंट, and similarly this second point I am getting as 4, 0. So we will be joining this line. So remind that beta we haven't plotted the inequality, we have plotted the equation, isn't it? So equation we will be writing over there. कौन सी equation हमने plot की अभी? We have got 3x plus 4y is equal to 12. Okay, we have plotted this line. Now our motto is not to find the line or solution. हमें क्या चाहिए? इस linear inequality का solution चाहिए. तो हमें condition की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. We are having 3x plus 4y less than equal to 12, isn't it? तब जब आपके पास 3x plus 4y less than equal to है, तो इसे चेक करने का एक तरीका होता है. If you want, you can use that one. देखिए, पहले आप सबसे एक कॉमन पैटर्न है, आपको चेक करना है लीनियर इनइक्वालिटीज है. जैसे कोई भी अभी आपने देखा नंबर इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी कितनी भी वैल्यू जो भी पूछा गया है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप के नंबर्स पूछे गए हैं, यू कैन गेट एनी वैल्यू. और वैसे ही x लेस देन 2 के लिए उस नंबर लाइन पे जितनी भी वैल्यूज है, इफ दे आर आस्किंग फॉर ग्रेटर देन 2, तो यू कैन गेट एनी नंबर इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव साइड, बिगर वैल्यूज. और अगर लेस देन पूछ लिया तो आप एनी ऑफ द वैल्यूज यू कैन गेट, मेनी वैल्यूज आर देयर ना. उसी तरह से यहाँ भी इनइक्वालिटीज में आपको यू कैन गेट मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटी. ओके, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो हाउ टू गेट दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर ओरिजिन. या तो आपके पास शेडेड रीजन जो है, आपका जो सोल्यूशन पोर्शन है, दैट यू विल गेट इन दिस डायरेक्शन. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो इससे बड़े मिल सकते हैं हमें, मतलब जो वैल्यू आपकी आ रही है सॉल्व करने से मोर लेस देन 12 है, तो वी कैन गेट, और मोर देन जैसी भी कंडीशंस है वी विल बी सी टेकिंग केयर ऑफ कि या तो इस तरफ मुझे सोल्यूशन मिलने वाला है या नहीं तो अपोजिट साइड में मिलने वाला है. सो लेट अस गो फॉर इट. आई विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ द पॉइंट, आई विल बी पुटिंग दिस पॉइंट 0, 0. ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0. तो मुझे चेक करना है कि जो सोल्यूशन पोर्शन है आपका, वो आपका ओरिजिन को कंटेन करता है कि नहीं.
इस चेकिंग से आपका बहुत ईजी हो जाता है ग्राफ प्लॉट करना, आपका शेडेड रीजन या सोल्यूशन पोर्शन आपको ढूंढना. सो व्हाट विल यू डू, आपने यहाँ पे एक रफ वर्क वाइज, इट इज नॉट, नो नीड ऑफ शोइंग इट, आपने 3x + 4y लेस देन इक्वेशन जो आपकी कंडीशन दी हुई है, इन प्लेस ऑफ x एंड y यू विल बी पुटिंग 0. 0 पुट करने से क्या मिला, यू आर गेटिंग, what are you getting, tell me, you are getting 0 is less than equal to 12. is this condition correct? देखिए 12 से छोटा होता है क्या 0? इक्वल तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, सो विल गो फॉर द सेकेंड कंडीशन, छोटा होता है, सो दिस इज करेक्ट. So that means 0 is the part of the solution of these type of linear inequalities, this linear equality basically. Okay, so our solution portion will be in this direction. Okay, and since they are asking a condition, one more condition is given to you. अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई तो सोल्यूशन आप यहाँ तक कहीं भी मेंशन करें. इफ इन द क्वेश्चन यू आर हैविंग x एंड y, जनरली जो होता है x and y both greater than or equal to 0, तो we will keep the shaded portion or the solution portion in first quadrant only, where we will get all x and y greater than 0. So this is, we can say, as your shaded portion or solution region. Okay, this portion, this triangle we can name as AOB is the solution portion or solution region. Okay, and these points which are on the boundary, the points which are on the boundary, जैसे A, B, C, जो भी A, B and O जो इस solution region के solution portion की boundary पे हैं, these are called corner points. ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जो सॉल्व करने हैं, यहाँ पे तो आपने एक ही लीनियर इनइक्वालिटी साथ में एक कंडीशंस भी रखी, x greater than equal to 0. You are aware of when x is equal to 0, this is the equation of y-axis. X equal to 0 shows y-axis, y equal to 0 shows x-axis, both are greater than 0, that means x-axis and y-axis की positive direction में. So in that manner, this is your solution region, solution portion. Now we will go for some of the mixed questions. बहुत 2-3 अगर आपके पास inequalities है, उनका bounded region, उनका region, solution region आप कैसे search करेंगे? Okay? Let's go for the second question. Sorry. The second question is x plus y is less than equal to 5. 4x plus y is greater than equal to 4. Then x plus 5y is greater than equal to 5. X is greater than equal to 4 and x is less than equal to 4 and y is less than equal to 3. अब इतनी सारी आपके पास इनइक्वालिटीज़ है जिसको आपको एक ग्राफ में प्लॉट करके उनका सॉल्यूशन रीजन सर्च करना है. ओके, नाउ वी विल गो फॉर अगेन द रिलेटेड linear equations are, we will find first of all the linear equations which are related to these inequations, because you are aware of we have to plot the graph of lines, linear equations. So now x plus y is equal to 5, इसका ग्राफ आपने प्लॉट करना है जैसे आप जनरली करते आए हैं. You will be taking x, y, 0, 5, then 5, 0. Okay, when you will be putting the value of x as 0, you are getting y as 5. And similarly the other condition. The next condition is 4x plus y is greater than equal to 5. तो हमें तो क्या लेना है, इक्वेशन लेके चलना है. Is equal to 4 we will take and we will plot the graph as x, y, and the value of x when 0, y is 4, when y is 0, x is 1, isn't it? Similarly, for the next equation, we are having x
plus 5y is equal to 5 and the points are, what are the points, tell me, x, y, और क्या मिल रहा है आपके यहाँ पे, x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करी तो यू हैव गॉट y as 1 एंड y की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो यू आर गेटिंग x is equal to 5. ओके अब नेक्स्ट इक्वेशन आपकी है x is equal to 4. x equal to 4 मतलब आपको मालूम है a line which is parallel to y axis and y is equal to 3 is a line parallel to x axis. ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो यू कैन प्लॉट द ग्राफ इजीली. लेट अस गो फॉर द प्लॉट ग्राफ. अब हमें ग्राफ जो प्लॉट करना है तो रिक्वायर्ड जितने भी पॉइंट्स हैं उनका मैक्सिमम जो भी पॉइंट तक है वहाँ तक आप ग्राफ में मेंशन करेंगे पहले. एंड हियर वी आर नॉट फाइंडिंग एनी नेगेटिव वैल्यू सो लेट अस गो फॉर इट. थोड़ा सा ग्राफ शो कर दें आप. This is again origin. This one is x axis, this one is y axis. Positive x and y axis we are getting here. And on plotting the points, proper gap पे ध्यान रखिएगा. आप proper distance पे points specify करें, mention करें. 1, 2, 3, 4, 5. Similarly, here also we will be taking the positive values. And the values are 1, 2, 3, 4, 5 because we can see that यहाँ पे हमें 5 तक के नंबर दिख रहे हैं. ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही पॉइंट्स अपलोड करिए. लेट्स गो फॉर ड्राइंग द ग्राफ. तो फर्स्ट पॉइंट्स वी विल बी कलेक्टिंग फर्स्ट 2 पॉइंट्स x 0 then y 5. तो दिस इज 0 5. ओके एंड द सेकेंड पॉइंट वी आर गेटिंग एज 5 0. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. रिमाइंड दिस, हमेशा याद रखिएगा आप इक्वेशन प्लॉट कर रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं. उसके बाद आपने इनइक्वालिटी का आपको कंडीशंस मिलेंगी. सो लेट अस प्लॉट दिस ग्राफ. वी आर गेटिंग दिस एज सो इन दिस मैनर वी हैव गॉट द इक्वेशन. अब एक के बाद जब भी आप इक्वेशंस लिखें, देयर आर मैनी इक्वेशंस नो, इफ यू विल बी प्लॉटिंग और द पॉइंट्स एंड देन फिर आपको सर्च करने में टाइम लग जाएगा प्लॉट करने के बाद. सो इट इज़ बेटर टू राइट द इक्वेशन फर्स्ट. तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो इस इक्वेशन का काम खत्म हो गया, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. 4x प्लस वाई, द पॉइंट्स आर 0 4, x is 0, y is 4 and when x 1 y is 0, this is our second line. We will be plotting its graph. We are getting it like this. And we will be writing its name also. The equation which this line is representing is 4x plus y is equal to 4. Let us go for the second equation. इस तरह से और सारी equations हम show कर सकते हैं. Then third one is x 0 then y 1 and when y 0 x 5. तो हमें इसे join करना है. We have to join this equation, these 2 points, and our equation is x plus 5y is equal to 5. For your convenience फिर से बता रही हूँ बेटा, पहले आप एक ही इक्वेशन प्लॉट करके उसका लाइन ड्रॉ करिए. एक इक्वेशन को ड्रॉ कर लीजिए, उसका इक्वेशन लिख लीजिए वहाँ, देन गो फॉर द नेक्स्ट. क्योंकि जब बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड. हो सकता है कोई गलत लाइन, आप रॉन्ग लाइन को ड्रॉ कर दें. सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. अब क्या दिया हुआ है, x is equal to 4. You are aware of when x is equal to 4 is given, that means the line is passing through x equal to 4 and parallel to y. So this line you will be getting here. This is x is equal to 4. What about the next one, y equal to 3? This is the line which is passing through y equal to 3 and parallel to x axis. So this is y is equal to 3. इस तरह से आपके पास इतनी सारी लाइंस आ गई हैं. Now you have to show its solution, मतलब इनइक्वालिटी पे अब हमको आना है. यहाँ तक हमने क्या किया, हमने इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट किया. Now we have to search for the inequalities. इनइक्वालिटीज आप कैसे यूज़ करें, लेट अस वन बाय वन हम सब करते हैं इसको सॉल्व. पहली कंडीशन में दिया हुआ है आपको x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5. फिर से आपने रफ में x एंड y की जगह 0, ओरिजिन से आप चेक करना करेंगे कि ओरिजिन इस इक्वेशन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. So when you have written, this should be a rough work. When you have written x 0 and y 0, you are obviously getting 0 less than equal to 5, which is a correct condition.
सो हमारी जो लाइन है x प्लस वाई जो लाइन है उसका जो शेडेड रीजन है, अब इनइक्वालिटी की बात करेंगे हम लोग। द शेडेड पोर्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर अब यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो आपको देखो पुट करने से आपको मिल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सही है क्या ये? नो ना। सो 4 इज लेस देन 0 इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, रॉन्ग कंडीशन। तो हमारा ओरिजिन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो जिस तरफ सोल्यूशन आपका मिल रहा है वो पॉइंट, आप उसके ये जो आपकी लाइन है, दिस इज योर लाइन, यू कैन okay. So now the solution region that we will be getting is in the opposite direction of origin because that condition is greater than or equal to. कभी कभी क्या होता है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं जो सेटिस्फाई कर देती हैं, तो उस समय के हिसाब से हमें आंसर में ये कंडीशन 0 0 पुट करना बेटर रहता है आपके लिए। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन x प्लस 5y ग्रेटर देन 5, आप उसी तरह से चेक करें तो आपको मिलेगा दिस ऑल्सो इज not including origin, not in the direction of origin. अब देखिए x is less than equal to 4, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आता है less than 4 की कंडीशन कौन सी है? x is less than 4. Similarly y is less than 3 means this will be the shaded region. So in all आपके पास कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है? Just see this thing, which portion you are getting as common. सभी रीजन का जो कॉमन पोर्शन होता है that will give you the answer. तो which portion is common? Just see बेटा, इनमें से आपका इस लाइन में भी इस तरफ आ गया, दिस लाइन हियर, ये लाइन में भी यहाँ पे आप अगर आप शो करें कॉमन पोर्शन में, this we can write. So the common portion in all is this portion, isn't it? So this is your solution region. Okay, so the solution region for these linear inequalities, the given conditions is this one, and here from here we can select the corner points. Corner points क्या क्या मिल सकते हैं आपको, देखिए ज़रा, you can start from any of the point. आपको ये point मिला, this is your corner point, the another point, this is B and C. इस तरह से देखिए, अब देखो यहाँ पे गैप बहुत कम है, अगर आपने प्रॉपर डिस्टेंस नहीं लिया तो आपका हो सकता है आपको एक डी एबोलिश हो जाए, कहीं गायब हो जाए, आपको ना मिले। दिस डी इज देयर, हियर वी आर गेटिंग ई। तो इस तरह से जो आपका सोल्यूशन रीजन है वो इन पॉइंट्स से कवर्ड है, बाउंडेड बाय दीज पॉइंट्स है। तो इस टाइप का सोल्यूशन रीजन क्या कहलाता है? बाउंडेड, क्योंकि चारों तरफ से वो पैक्ड है। ओके, सो कोई भी पोर्शन यहाँ ऐसे ओपन नहीं दिख रहा कि जहाँ पे हमारा आंसर नहीं है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री आपके पास यहाँ पे है। सो दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन पोर्शन एंड इन दैट मैनर वी आर गेटिंग द कॉर्नर पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपको बस अभी 11th में आपको सोल्यूशन रीजन आपको दिखाना है, उन इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन पोर्शन आपको शो करना है। यही चीज़ आगे 12th में चली जाती है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नाम से टॉपिक शुरू होता है, उसमें आपने वर्ड प्रॉब्लम्स या सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं, जिसका आपको सोल्यूशन सॉल्व करना फाइंड करना पड़ता है। एक्स की वैल्यूज़, उस समय आपके कॉर्नर पॉइंट्स यूज़ होते हैं। व्हेन यू विल बी लर्निंग अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यू विल गेट दैट। तो उस समय अगर आपके पास ये नॉलेज है, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज कंडीशंस, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। And now from this year CBSE has introduced case studies also. In the question case study format के भी क्वेश्चन आते हैं, जहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स में या किसी एक स्टोरी देते हुए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सब चीज़ों में भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, अदरवाइज दिस कैन बी अ बिगर मार्क क्वेश्चन। ठीक, वैसे भी केस स्टडी में भी आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा कि CBSE ने प्रिस्क्राइब किया, और वैसे भी ये क्वेश्चंस आपके बिगर मार्क्स के ही आते हैं एग्जाम में। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ आपने कौन सा रीजन पढ़ा? द टाइप ऑफ रीजन क्या पढ़ा आपने? बाउंडेड। ये रीजन आपका क्या है? दिस रीजन वी कैन से एज बाउंडेड रीजन। दिस सोल्यूशन रीजन इज बाउंडेड क्योंकि इट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। Let's go for the next example. It is
We are having the next question as the next question is 3x plus 4y is less than equal to 12, then 4x plus 3y less than equal to 12 again, then x minus 2y is less than equal to 0 and x and y both are greater than or equal to 0. चलिए जल्दी से इस ग्राफ को भी प्लॉट करते हैं. इसमें भी एक स्पेसिफिक कंडीशन आपको मालूम दी गई है, ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व करते समय. सो लेट्स प्लॉट द रिलेटेड लाइंस. अब अगर हमने देखा यहाँ पे रिलेटेड इक्वेशंस क्या क्या हैं, व्हाट आर यू गेटिंग एज रिलेटेड इक्वेशंस? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. इसका ग्राफ आपने प्लॉट करना है तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे. यू विल बी गेटिंग द पॉइंट्स x एंड y एज x की वैल्यू व्हेन 0 है, y इज 3, व्हेन y इज 0, x इज 4, isn't it? Similarly for the second equation 4x plus 3y, बिल्कुल previous conditions you have to use. यहाँ आपको क्या मिल गया? You are getting xy as when x 0, y 4 and when y 0, x is 3. Okay. The next is x minus 2y is less than equal to 0. Okay. Or we can adjust this question as 2y greater than or equal to x. This can be written for this equation. Okay. यहाँ याद रखिएगा एक मिस्टेक जो बच्चों से हो जाती है, यहाँ पे आपने x को 0 पुट किया पहली बार तो आपको y तो 0 मिल रहा है. अगेन नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, व्हेन y, जैसे हमने यहाँ पे जो कंडीशन हम प्रैक्टिस करते हैं वही तरह का आप यूज़ करके फिर से 0y तो x फिर से 0, तो इस तरह से आपके पास 2 बार 0 0 आते हैं. फिर कैसे हो जाएगा? तो पॉइंट क्या मिला आपको? ओरिजिन ही तो मिला दोनों बार. तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करिएगा. वंस यू हैव गॉट 1.00, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया तो उसको रिपीट नहीं करना. यू विल सर्च फॉर एनी अदर वैल्यू. और जो वैल्यू भी आप सर्च करेंगे कैसे करेंगे? जो प्रीवियस पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं उनके आसपास की ही वैल्यू आपने पुट करनी है. सो लेट अस गो फॉर, अगर मैंने y को 2 पुट किया तो आई एम गेटिंग x एज दिस, आई विल टेक एज इक्वेशन ऑब्वियसली जब मुझे प्लॉट करना है इसे. तो when I have put y as 2, x is 4, we can see ना, तो इस तरह से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा. सो हमेशा याद रखिएगा 0 0 कोई भी पॉइंट को रिपीट नहीं करना. यू रिक्वायर्ड मिनिमम 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन, सो 2 डिफरेंट पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. द नेक्स्ट इज x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कंडीशन आपको मालूम ही है. लेट अस प्लॉट द ग्राफ. अगेन द ग्राफ वी आर प्लॉटिंग इज दिस. This is positive x-axis, y-axis, and the points we are having up to 4, 1, 2, 3, 4. Similarly for x-axis also proper gap is very much required, same dimensions. We are having 1, 2, 3, 4. Okay, let's plot the point. पहला point जैसे हमने बताया था आपको पहली लाइन पूरी ड्रॉ कर लीजिए आप लोग. The point you are getting is 0, 3 is this one and 4, 0 is this. Let us join the points to get our equation. Nearby ऐसा adjust कर लीजिएगा. मतलब सही आपका तो proper gap आना चाहिए. जहाँ भी आपने distance wrong किया you will lose your marks for it. We are getting the equation like this. The second equation we are plotting is when x 0, y is 4, when y is 0, x is 3. So this equation we are getting. So carefully plot the, आपके पास scales सारे tools होते हैं geometry box के, उनको लेके रखिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं. So the next is because figure draw करने के, पूरे सही figure draw करने के marks होते हैं. You can't do a free hand drawing. The next one is when x 0, y 0, see this thing beta, इस बार आपकी जो equation है it is passing through the origin. The next is x 4, y 2, when x is 4, y is through 2 is this point. So we will be plotting, we will be joining these 2 points to get the third line. अब equation देखो हमने नहीं लिखी, अब फिर से ढूंढना पड़ेगा. When x 0, y 3, तो ये point है, फिर इसको ढूंढ के हमें equation लिखनी पड़ेगी. तो इससे अच्छा है
पर आप साथ में ही पॉइंट लिख लीजिए इक्वेशंस। हमेशा याद रखिए, बार बार बता रहे हैं, यहाँ इक्वेशन लिखेंगे, इनइक्वेशन नहीं। नाउ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 वी आर अवेयर ऑफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना। एंड लेट्स प्लॉट द ग्राफ, लेट्स सर्च फॉर द शेडेड रीजन, ऑल द कंडीशंस आर लेस देन और इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन में जब आपने ओरिजिन पुट किया, आपको दिख रहा है कि द लाइन इज टूवर्ड्स द origin is a solution of this thing. The second line is also showing the same condition. Let us see what about the third one. Third one क्या होगी, देखिए जरा। In the third equation, the line itself is passing through the origin is given to you, है कि नहीं? दो चीजें तो आपको प्रैक्टिस में आ गई होंगी, आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब थर्ड लाइन इज इटसेल्फ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन है कि नहीं वो तो नहीं बोलना है उसमें कुछ, ओरिजिन तो लाई कर रहा है उस लाइन के ऊपर, isn't it? Origin is lying on that line. तब हम क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एक पॉइंट ऑफ ईदर ऑफ द साइड्स यू कैन टेक, कोई भी एक साइड में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे हमने फॉर माय कन्वीनियंस आई हैव टेकन दिस पॉइंट, आई हैव टेकन दैट 1 0, और उस इनइक्वालिटी में जो मेरे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, तो विच इनइक्वालिटी आई एम हैविंग x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं ये पॉइंट पुट करती हूँ, in place of x I'll be writing 1, in place of y 0, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 is less than equal to 0। तो is this point satisfying the condition? No, because 1 cannot be less than 0, इक्वल तो होता ही नहीं, बट कैन नॉट बी लेस देन 0। तो जहाँ पे आपने जो पॉइंट लिया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका सोल्यूशन शेडेड रीजन होगा, लाइन का सोल्यूशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो द direction is this. So in that manner again we have got a bounded region. We have to select the common portion in between, which is this one, isn't it? So in that manner I have got the common region. I can name it as the points, as one point already is O, the second point I can take as A, this one can be taken as B, and this point is C. So OABCO is your bounded region. Okay, so ultimately you will be writing the answer as OABCO is the required solution region. Okay, and OABCO comma are what? They are called corner points, isn't it? And this type of solution is called, this region is also called, एक नाम दिया जाएगा अब जब next class में पढ़ेंगे, this point is called, this region is called feasible region. ठीक है, ये नाम भी आप जब 12th में जाएंगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा, विच इज यूज्ड फॉर द शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन, विच इज बाउंडेड, और अनबाउंडेड भी होता है, जरूरी नहीं कि अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे दे वर ऑफ बाउंडेड रीजन। लेट्स गो फॉर वन एग्जाम्पल फॉर अनबाउंडेड ऑल्सो। ठीक है, किस टाइप के रीजन्स किसी लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सॉल्व करने से आपको मिल सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करने से आपको मिलते हैं। सो वेरी लेस क्वेश्चंस आर लेफ्ट टू सॉल्व नाउ। द पैटर्न्स में यू कैन, एज मच एज यू विल प्रैक्टिस, द कंडीशंस विल बी मोर क्लियर टू यू। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, the next question is x plus 2y greater than or equal to 8 and x minus y greater than or equal to 0. The next is 2x plus y greater than or equal to 2. Let us plot this graph. देखते हैं इसका solution कैसे मिलता है। तो फिर से आपने इसके equations के ग्राफ मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अभी आपको मालूम है कि आपको कैसे पुट करना है। Solution of equations. So first के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, फर्स्ट बॉक्स इससे रिलेटेड इक्वेशन से हमें मिलेगा। We will be getting the first box related to the equation which is given by this inequality. X, y when x 0, y is 4, when y 0, x is 8. तो सेकेंड कंडीशन से हमें जो रिलेटेड इक्वेशंस, याद रखिएगा इक्वेशंस बनाने हैं,
Since we have solved many questions like that, so I am directly writing it, but this shouldn't be done in exams. Okay, so I am getting the answer as for the second condition, xy, when x0, y0 again. So will you write 0 0 again? No, no. So we will be taking the next value x4, तो y भी 4 हो जाएगा. ठीक है. The next condition is giving us the solution as, इसका solution box क्या आएगा आपका, जिसके points कौन कौन से आ सकते हैं. तो when x0, y is 2, when y is 0, x is 1, isn't it? अब let's plot the graph of it. The graph is again x, y axis, point of intersection is origin. The points that we are getting are क्या क्या मिल रहा है देखो, up to 8 गया है x की वैल्यू, y की वैल्यू तो minimum 4, तो we will be taking 1 2 3 4, it's enough for us. And फिर यहाँ पे कहाँ तक शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा और हमें लाइन चाहिए आगे, 8. Okay, so let's plot the graph again. We are getting x0 to x, y 4 first point, second is y0, then x8. इस ग्राफ को थोड़ा सा प्लॉट करिएगा. We will be getting the graph like that. अब हम पिछली बार की गलती नहीं करेंगे, सीधे पहले इक्वेशन लिख लेंगे. This is x plus 2y is equal to 8. Okay, let's go for the second one. Second is x minus y equal to 0. तो कैसे करेंगे, देखिए आपने जाना है ना इसको कि यहाँ this is passing through origin, and when x is 4, y is also 4, तो this point you are getting, so you will be the join of this will give you the line, the equation of line you will be writing here as x minus y equal to 0. And the third one that you will be getting is what, third is x0 तो y2 आ रहा है आपका point, and when y is 0, x is 1, तो this is your line. So you have to plot this line, proper point से पास होने वाली lines बनाइए. This is 2x plus y is equal to 2. ठीक है, and conditions are not mentioned here, but generally x y greater than equal to 0 लेके चलना होता है, लिखा होता है क्वेश्चन में. Whatever they are asking in question, you will be using that condition. Let us go for the shaded portion again. फिर से वही condition आपने use करी. आपके मालूम है कि जब आप 0 put करेंगे तो for the first all the 3 conditions देखिए ज़रा. first condition पहले देखते हैं, first and third. वहाँ पे first condition is this, यहाँ पे shaded region origin में की तरफ नहीं है क्योंकि origin is not satisfying it. You can check it easily. For the third case also, this first case में origin included नहीं है. For the third case, it is greater than equal to 0, so 0 is greater than 2 is not possible. So again, for the second case also, the value of 0 is, origin is not included in this shaded region. ठीक है, let's go for this next equation. क्योंकि वो खुद origin से पास हो रही है, तो we can't check it using 0 0. तो हमने फिर से जैसे हमने पिछली बार किया, we can take 1 0. This point can be taken to prove the condition or solve check the shaded region. अब हमने अगर x की जगह पे 1 पुट किया फिर से, for second condition if I'll write x as 1, y as 0, what shall I get? मुझे क्या आंसर मिल रहा है देखिए ज़रा बेटा. I am getting this portion as the shaded region because that 1 0 is satisfying the condition. So अब common portion आपको देखना है, दोनों का common portion यहाँ पूरा आपका इस तरफ चला गया values. First equation की इस तरफ चली गई सारी values. What about the second condition? Second condition की इस तरफ आ गई, and the third one क्योंकि first की इस line से opposite direction में नहीं जा रही तो वहाँ तक हम लेके ही नहीं जाएंगे. For the third case and line पे नहीं जा रही तो इस तरफ का भी portion rub हो गया. What about the third case? Third case is also in upward direction. So this is our shaded region that we are getting. Which type of shaded region is this? See this shaded region is not
covered from all the sides. Okay, so this is called unbounded region. Okay, यहाँ पे आपके पास corner points कौन से मिल रहे हैं? You are getting the corner points, this one and these 2 points you can see here, isn't it? Corner points are the point of intersection of lines जो fixed हैं. ऐसे तो बहुत सारे infinite points हैं, but the corner points we used to take as the points of intersection of lines. So I am getting only 2 points here, A and B. This is unbounded region, we can say. ठीक है, तो इस तरह से आपका सोल्यूशन का रीजन है, सोल्यूशन का रीजन मिला आपको, पर वो अनबाउंडेड है. यहाँ पे इमेंस नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर और हर एक पॉइंट का कॉर्नर पॉइंट हमारे लिए निकाल पाना मुश्किल है. ठीक है, सो दिस इज योर पोर्शन. यहाँ तक पूरा जाएगा आपका आंसर. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. द लास्ट कंडीशन इज let's write the last pattern of question. It is containing 4 inequalities. We can say it is x minus 6y is greater than or equal to 3. The next is 4y is greater than or equal to 7x plus 14. You can see this value. Okay, so what to do? I'll be adjusting this inequality as minus 4x plus 7y is greater than or equal to 14. I have taken the condition like that. Okay, and the 2 more conditions are x and y greater than or equal to 0. Related equations. X minus 6y is equal to 3. We will be getting the points as points. क्या मिल रहे हैं यहाँ पे देखिए ज़रा आपको. You are getting the point कैसे? When x 0, y is what? For plotting the line we can take negative points also, but हमें shaded region के लिए जो conditions हैं उसके हिसाब से आंसर आना है. We are getting the first point as y x 0, तो y is minus half. तो जहाँ अगर हम कोशिश करें, अगर आप चाहें तो आपको जब नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन एडजस्ट करके कोई भी पॉइंट्स लेके आ सकते हैं. ठीक है, हियर आई एम टेकिंग दिस एज माइनस हाफ और माइनस 0.5. ठीक है, द नेक्स्ट वैल्यू दैट आई एम गेटिंग इज व्हाट? x की वैल्यू आपकी 0, y की वैल्यू जब 0 है तो x3 आ रहा है आपके पास में. सिमिलरली द सेकेंड पॉइंट इज माइनस 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 14. इसका आपका सोल्यूशन क्या क्या आ जाएगा? जस्ट चेक इट आउट. वी आर गेटिंग x एंड y. Here when x is 0, y is 2. When y is 0, x is negative. कितना मिल रहा है देखिए ज़रा. Is it minus 7.5, 3.5? Or we can write 7/2 also. So we are plotting the graph now. The graph is हर बार आपको यही पैटर्न यूज़ करना है, बस थोड़ी बहुत कंडीशन वेरी करती हैं. तो अगर आपने 1-2 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बना लिए तो एवरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली. इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन द सेम मैथड वी आर यूजिंग. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट. द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर टेकिंग एज 0 एंड 0.5. तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक 1 भी बना लिया. -1 आई एम शोइंग हियर. Here also I can write, अच्छा x पे आपको थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए हैं. You can write -2, -3 also. Or let me clean the portion so that I'll write later. I'll be getting the answer. I can get the answer as -3 also. This is minus x axis minus y axis. So let us go for the points. क्या मिल रहा है देखिए ज़रा. You are getting the values as, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट हमने शो कर दिए अपने कन्वीनियंस या रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत है. तो आपने पहले केस में देखा है क्या मिला था आपको, जब x 0 था y आपका -1.5 था. ओके, y is 0.5 -0.5, तो इट विल बी हियर
this I am taking as -1, so this point is showing -0.5, and when y is 0, x is 3, this is the point, next point is this. We will be plotting the graph like that. ये graph हमें मिला. The next condition is when x 0, y is 2, when y 0, x is -3.5. अगर कहीं यहाँ -4 है तो इनके बीच का एक पॉइंट आपको -3.5 मिलेगा. And you will be plotting the graph like that. ठीक है, आपको ये ग्राफ मिल गया. Let's go for the shaded region. I am taking origin again as the condition. देखिए क्या मिल रहा है, जब आपने 0 0 पुट किया तो condition is not satisfying. So I'll be writing 0 0 is, ये जो origin है आपका वो included नहीं है. So for the first case x minus 6y, इक्वेशंस कौन सी हैं देखिए ज़रा, which equations are there. तो हमने तो इक्वेशन लिखी ही नहीं यहाँ पे. We have to write x minus 6y is equal to 3 and this one is minus 4x plus 7y is equal to 14. अब हमने पहला शेडेड रीजन ढूंढा, उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है. सो वी विल गो इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में पूरा आपका सॉल्यूशन पोर्शन दिख रहा है. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? जब आप जाएंगे नेक्स्ट वाले में पुट करके देखिए फिर से वैल्यू ज़रा. यहाँ पे 0 0 पुट किया तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ओरिजिन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस वन ऑल्सो. सो आप देखिए यहाँ पे दोनों ही लाइंस का कोई कॉमन पोर्शन नहीं दिख रहा. बोथ द लाइंस आर, both the inequalities are in opposite direction. Their solution region are in opposite direction. And since we are solving the system हमेशा common answer देता है. You have learnt in previous videos of linear inequalities also. So क्योंकि आपको common region कुछ नहीं मिल रहा, so we have to search for, हमें तो देखना है first quadrant में कहीं जाके ये lines आपस में intersect करेंगी because they are having यूनिक सॉल्यूशन. कहीं भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आपको दिख रहा है जैसे आपने 10th में पढ़ा. सिंस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बट द कंडीशन गिवन इज दैट कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर लाना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं मिला. सो वी विल राइट दिस सॉल्यूशन. फॉर दिस कंडीशन वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशन. So these are the patterns, children, that you will be learning in linear inequalities. So this is over. This chapter is over now. You can solve as many as question. You can take example. It is maths. जितनी भी practice करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है. And एकदम basic से शुरू करिए, छोटे छोटे points से शुरू करते हुए फिर आगे बड़े questions तक जाइए. You will come to know everything very easily. So goodbye, dear children.